All right. So when we're talking about the comparison of economic growth rates and living standards, basically, you know how we talked about the real GDP, GNI, and NNI tells us about the how much output is being produced in an economy. So in this case, if the real GDP of Indonesia grew from $1.02 trillion in 2017 to $1.04 trillion in 2013, when we're making the comparison, they're saying that's about 1.96% growth, right? So, नीचे भी अगर if you look at the data is showing that Malaysia, Pakistan, they have Poland, they have a much higher economic growth rate, whereas Germany, Singapore, 0.6, 0.8, that's a very little. UK 1.4, these are very little economic growth rates. So does that mean that their living standards is not that good in comparison to Pakistan or Malaysia? Of course not. This is just the rate of change, that by how much the GDP is changing, right? So हमें याद रखना है for our essay purposes, and we've done this in the past also. We want to talk about some problems with the economic growth rate, the limitations when we're using economic growth rate as a good indicator. One of the discussions we're making over here is that, remember, you want to look at कि हर कंट्री के अंदर एक शैडो इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। वो शैडो इकोनॉमी क्या होती है कि जो आपने जीडीपी के नंबर्स निकाले हैं वो एक्चुअली they're not true numbers. They're understated because there's a lot of undeclared economic activities that are happening. One that is unreported and one that is illegal, right? Like smuggling वगैरह illegal में आ जाती है, जो कि बहुत होती है. Through Afghan and Iran borders, you have all these smuggling taking place, right? And then you have all these retailers who are not declaring how much income they're making. So ये shadow economy, some people say that Pakistan की economy almost 200% is undeclared, right? So whatever numbers that we're showing, economy is much, much bigger than that because teachers giving tuitions or doctors who are doing clinics, who are taking accepting cash. So and all the retailers, they're all doing cash business and they're not declaring. So they're saying there is a way that you can actually measure the size of that. The way you can measure is you can look at the people spending जो जीडीपी आप एक्सपेंडिचर सी आई जी एक्स माइनस एम के थ्रू निकालते हो और जो इनकम मेथड से निकालते हो तो द गैप विल बेसिकली टेल that how much people are declaring and how much they're spending. Obviously, you need to have ability to measure how much they're spending because when a person is doing the cash transactions, it is almost impossible to trace that cash transactions. If they're making transactions through their banks and cards and credit cards and even like for example, I heard recently one individual was saying that okay, fine, people are not declaring their income, but even if we have like access to people um, Food Panda के numbers, we'll be able to see that how much they're spending on the food related stuff through cash, right? तो उससे भी एक आपको बड़ी clear idea हो जाएगा कि अच्छा जी ये कमा इतना रहे हैं लेकिन खर्चा इतना कर रहे हैं. So obviously जो declared economy होती है when you're considering the size of the shadow economy between countries, there's a lot of things. अगर एक हर country का या एक कंट्री का पाकिस्तान का अगर शैडो इकोनॉमी का साइज अगर कांस्टेंट रहता है एंड इट्स नॉट चेंजिंग देन यू कैन मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट मच मोर इजीली, राइट? लेकिन कंट्रीज का मसला ये होता है कि जो उनकी शैडो इकोनॉमीज होती हैं वो वैरी करती हैं कि आपके मुल्क में कितना टैक्सेशन है, कितनी पेनल्टीज आप लगाते हैं टैक्स इवेजन और पकड़ जाने पे, या आपका सोशल एटीट्यूड कैसा है टूवर्ड्स इलीगल एक्टिविटीज. तो इन सारी चीजों के ऊपर इट इज डिपेंडेंट, राइट? फिर साथ में जब आप जीडीपी के नंबर्स निकालते हो आप कहते हो भाई ये जो ऑफिशियल जीडीपी के नंबर्स हैं इस नंबर में कितनी एक्यूरेसी है. दैट इज रिलायंट ऑन the literacy level in your economy, the non-material goods and services that are being sold, all kinds of cooking oil, electricity, those would be considered material goods and services. Like in something like, mosquito spray might not be as material good, right? तो प्लस जो आपके पास डेटा कलेक्शन हुई है वो कितनी एक्यूरेट है, जो लोग टैक्स फॉर्म फिल कर रहे हैं वो कितनी एक्यूरेटली फिल कर रहे हैं, बिकॉज इवन जब आप टैक्स फाइल करते हैं तो ऑल द टैक्स फाइल्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज नॉट बीइंग चेक, राइट?
इसमें से 1% 2% जो है टैक्स फाइल्स जो होते हैं वो आप रैंडमली चेक करते हैं और उसके अंदर आप वेरिएशन देखते हैं कि वो ठीक था कि नहीं था, राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा वेग होता है। Now, along with this, obviously GDP does not take into account the non-marketed goods and services जो मैंने अभी बताया था, जो लोग गार्डनिंग कर लेते हैं या हाउसवाइफ घर का ख्याल कर लेती हैं, जो आप हॉबी रिलेटेड चीजें कर लेते हो अपने घर के अंदर, रिपेयर्स कर लेते हो, प्लम्बिंग कर लेते हो, तो ऑब्वियसली दीज आर थिंग्स विच आर आल्सो अनरिकॉर्डेड इन द इकोनॉमी। So obviously there are a lot of things which are missing in it. साथ में इसमें ना पोल्यूशन के बारे में है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में नहीं है, एनवायरनमेंट के डैमेजेस के बारे में नहीं है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में नहीं है, हेल्थ केयर एजुकेशन के बारे में नहीं है। So there's a lot of material which is basically missing in this. Okay. तो जब आप बात करते हैं फिर फर्दर ऑन वी गो इनटू द डिटेल्स अबाउट कंपैरिजन ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड इन एन इकोनॉमी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हाउ इज दैट sort of changing, right? तो हम कहते हैं जो रियल जीडीपी पर हेड है, जीडीपी पर हेड इज बेसिकली आपका जो जीडीपी था डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन पर पर्सन इनकम्स, राइट। जब हम रियल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली रियल फैक्टर इन एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है, तो इट इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो इसके अंदर आप देखते हैं कि पिछले साल का जीडीपी पर हेड कैसा था और इस साल अगर जीडीपी पर हेड बढ़ गया है तो यू वुड से कि ओके फाइन, द कंट्रीज इनकम पर हेड इज इंक्रीजिंग बिकॉज मोर आउटपुट हैज बीन प्रोड्यूस्ड, राइट। Real GDP is founded by dividing the total GDP by its population. अब जब आप real GDP निकालते हैं और find the GDP per head has increased, but ये भी तो हो सकता है क्योंकि ये real GDP per head is an average, ये भी तो हो सकता है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो और ज्यादा गैप क्रिएट हो गया है एंड हैव के पास और ज्यादा आ गया और हैव नॉट जो है और वो वर्सनिंग हो गए हैं। इवन दो जीडीपी पर हेड नंबर्स गोइंग अप, इट्स नॉट बिकॉज कि एवरीवन इज अर्निंग मोर मनी, इट माइट बी बिकॉज on average some people are making a lot more than the others have fallen more into poverty, ये भी हो सकता है। अब जीडीपी डज नॉट रिफ्लेक्ट के आपकी इकोनॉमी में कौन से गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। नाउ इफ एन इकोनॉमी इज गोइंग टुवर्ड्स द वॉर, तो ऑब्वियसली वो वॉर रिलेटेड गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, तो इट विल टर्न आउट कि आप कह रहे हैं कि भाई इसका नंबर जीडीपी तो ऊपर बढ़ रहा है, दे आर प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट, पर टर्न्स आउट कि वो तो वॉर रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज है, दैट डज नॉट इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, इट एक्चुअली वर्सन्स इट। Do you follow? तो ये इस तरह से तो ऑब्वियसली इट विल नॉट show a better picture. फिर more consumer goods and services such as households, food, clothing and transport raises the living standard of the people. साथ ही के अंदर क्या आपकी इकोनॉमी के अंदर आप कैपिटल गुड्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हो या कंज्यूमर पे कर रहे हो, यू नो दिस राइट। कंज्यूमर गुड्स इज व्हाट पीपल कंज्यूम एंड देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव, पर अगर आप कैपिटल गुड्स की तरफ कर रहे हो तो दैट मीन्स इट्स अबाउट मशीन्स। But future is better with you investing in machines right now, right? Your PPC is going to shift outwards and you'll be able to consume more goods in the future because you'll be able to produce more, you'll be more productive, right? So even if people are able to enjoy more consumer goods and services, it does not necessarily mean that they will be much more happier. As access to more and higher quality product rises, the desire for even more and better products may rise even further. And people are like, yeah, you know what, I have Toyota Corolla, but I would love to get myself a Land Cruiser or something like that, right? So are they really much more better off in that way? ठीक, सो दैट इज समथिंग दैट वी फैक्टर इन एज वेल। फिर उसके बाद हमारा फर्दर डिस्कशन और मजीद जाता है दैट रियल जीडीपी measures the quantity of output that is being produced in the economy, but not its quality. Maybe the quality of the good is falling. By the way, I don't know if you know,
But they say that, you know what, if the country is getting richer, they tend to have better, higher quality goods because that's what the public wants. But low income economies में क्या होता है कि because generally the population is poor, they want more cost effective goods. So जो आपके producers होते हैं, they basically try to find more and more cheaper alternatives. And what happens is कि आपकी economy में से finer products are actually eliminated, right? And mediocre products से आपकी economy बिक रहे होते हैं. So does that mean that if your GDP is rising, why? Because there's more selling of low quality products. Is that going to improve the living standard of the people? We say not necessarily, right? उसी तरह से, if your GDP per head is going up and there's more overtime and more people are working more hours, is that going to really improve their living standards? Because हम MEW के अंदर we are saying measure of economic welfare is actually one of those things which can be factored in. उसी तरह से over the period of time जो quality है, जो environment की बात होती है, like for example deforestation की वजह से lifestyle. If you watch like English movies, you would see that people are living a lot near the forests and these kind of areas, and the air is much more on the cleaner side. But when these areas are developed, obviously you have to chop off these uh, uh, forest areas, and you have to build an airport and metropolitan cities and railway lines and electric lines and water lines and all of these. And obviously, uski wajah se, the more urbanization you're doing, your environment is getting damaged. So now, how would you factor that in your environment, your point of view, say, right? So there's a lot more in this.